Hello everyone, welcome back to the class beta. Today we will start a new exercise beta, exercise 4.4 with the first question, find the nature of the root of the following quadratic equation. If you already observed my video beta, previous video, I already explained entire how to find out the nature of the roots, right? If the real root exists, right, means we know it, there are three conditions beta, right? D greater than 0, D equal to 0 and D less than 0. If D greater than 0, right, and equal to 0, in both the way, real root exists. This one is no real roots. Got it? If D greater than 0, then real roots and unequal. मतलब distance. If D equal to 0, then real roots and equal roots. Got it? And if these two conditions appear, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आती है तो हमें इसको सॉल्व करना है एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गॉट इट? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बेटा, 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. What you have to do? First of all, find out the d, and for d you have to compare this equation with the general equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. Compare it beta. What is that? A equal to 2, b equal to minus 3 and c equal to 5. Find out the d beta. What's the formula for it beta? B square minus 4ac beta. Any doubt? Put the value beta. Minus 3 square minus 4ac. The value. Minus 3 square it's a 9. Minus 4 2 is a 8. 8 5 is a 40. What's the answer beta? Minus 31. Right? Minus 31 means negative. Negative means नो रियल रूट. मतलब इससे आगे सॉल्व होगा नहीं. इसका नेचर कैसा होगा बेटा? नो रियल रूट्स. डन. ओवर. इजी बेटा. फाइंड आउट द सेकंड वन बेटा. अगेन कंपेयर इट बेटा. सो व्हाट इज दैट? a equal to 3, b equal to minus 4 root 3 and c equal to 4. Done. Find out the d beta. That is, what's the formula beta? B square minus 4ac. Got it? Any doubt beta? B square means minus 4 root 3 square minus 4ac. Got it beta? Okay. Minus 4 minus square plus 4 square 16 and root 3 square 3 beta. Minus 4 3s are 12. 12 4s are 48. 16 3s are then 48. 48 minus 48. 0. Got it? D equal to 0 means real root exists, and both the roots means value of x are equal. Right? So we need to find the value of x. What's the formula beta? Minus b plus minus root d by 2a. So easy. Put the value beta. So x is equal to minus the value of b beta, minus 4 root 3 plus minus the value of d beta, it's 0 divided by 2 into a, value of a beta 3. Got it? Minus minus plus, right? So it's a 4 root 3 divided by 2 3s are 6, right? 2 2s are 4 and 2 3s are, so your answer is 2 root 3 by 3. Both the root are equal means the value of x equal 2 root 3 by 3 comma 2 root 3 by 3. Any doubt in second one beta? Anyone? Move to the third one beta. Right, same process beta. The value of a equal to 2, the value of b equal to minus 6 and c equal to 3. Find out the d formula. B square minus 4ac means minus 6 square minus 4ac beta. Any doubt? Minus 6 square beta, it's a 36 minus 4 2s are 8, 8 3s are 24, means the value of d equal to beta 12. Easy? Any doubt? Now find out the value of x beta. It's a minus b plus minus root d by 2a. So x is equal to minus, in place of b beta it's a minus 6 plus minus root d means 12 beta. Put the value one by one. It's so easy. You have to remember only two formula. First one is the d and second one is for the x. And then put the value. Value of a beta 2.
So h equal to minus minus plus 6 plus minus. We know it's 12. 12 means beta 4 3s are. Got it? तो 4 बाहर आ जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा और अंदर √3 as it is. कुछ डाउट बेटा? 2 आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 4, 2 2 जा 4. तो आपको h से दो आंसर मिले बेटा, राइट? That h equal to 3 plus √3 by 2 and h equal to 3 minus √3 by 2. These two are the roots, or you can say zeros of this equation. Any doubt in the first question beta? It's so easy. First of all, you have to find out the nature of the root, and if the real root exists, then you have to solve it out and find the value of h. Right? Please write down. Continue with the beta. Question number 2. In this question, find the value of k, right, for this quadratic equation so that they have two equal roots. And we know it beta. Equal root means d equal to 0. D means discriminant. D equal to 0. Right? So start with the solution beta. Right? What's the value of a? We have to compare with the general equation beta. So a equal to 2, b equal to 3 and c equal to 3. Any doubt? We know that d equal to 0 because equal root. Two equal roots is given in the question. D means b square minus 4ac equal to 0. The value of b beta, okay, minus 4a, value of c beta 3. Got it? So k square minus 4 to 8, 8 3 is 24. So k square equal to 24. But we need the value of k beta. So k equal to plus minus. Whenever it's a square root, plus minus, you have to write down beta 24. 6 4s are, so you can write down also like this. 6 into 4 होता है ना बेटा 24. तो 4 बाहर आ जाएगा 2 √6. This is your final answer. So easy beta, right? For the first one, got it? Second one, if you observe the question beta, it's not given like this. See beta, say x in bracket x minus 2. So before compare with the general equation, you have to simplify it. Means you have to solve it. So 3x into x beta, 3x square, right, minus 2x plus 6 equal to 0. Got it? Now you can compare it with the general equation. So you will get a equal to 3 beta, b equal to minus 2k and c equal to 6. Easy? Now again, 2 equal root means d equal to 0. Means b square minus 4ac equal to 0. Put the value beta. B means minus 2k minus 4a c. Got it? Minus square plus 2 square 4k square minus 6 4s are beta 24 k equal to 0. Got it? 4k common beta. What is that in bracket? K minus 6 equal to 0. So 4k equal to 0 and k minus 6 equal to 0. तो k equal to 0 and k equal to 6. यहाँ पे हमें दो आंसर मिले, राइट? क्या दोनों सही है? We need to check it out. If I will put k equal to 0 in the question here or here wherever बेटा, अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करते हो, 0 into x square 0, मतलब पहला टर्म गायब हो गया. और हमें पता है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा x square कंपल्सरी वी नीड इट, राइट? सो k की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, अदरवाइज वो टर्म ही नहीं बचेगा. मींस k equal to 6 is the only one answer of this question. Got it beta? Any doubt? Please write down. Continue with the next question beta. Question number 3. Is it possible to design a rectangular mangrove whose length is twice its breadth? What is the given in the question beta? Length is twice, is means equal to twice its breadth, and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. अगर ऐसा हो रहा है
तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करो. मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक इट आउट, राइट, दिस टाइप ऑफ कंडीशन हैपन और नॉट, and that we can find out using d. D means discriminant, and for that we need first of all quadratic equation, right. तो suppose मैं breadth तो बेटा let breadth तो मैं थोड़ी देर के लिए h ले रहा हूं, तो length ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी बेटा 2h, got it, right. Area we know that length into breadth equal to 800, length बेटा 2h into breadth h, that is 800. 2 उस तरफ जाएगा बेटा, h into h square is equal to, right, 400 बेटा, 2 400 जा, so h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस 400 तो इतना होता है 20. बट लेंथ हो या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, मतलब राइट, राइट, नो नेगेटिव. या आप लिख सकते हो लेंथ और ब्रेथ, राइट, नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म. सो करेक्ट आंसर इज x इक्वल टू प्लस 20. एनी डाउट बेटा, राइट. सो इफ x इक्वल टू 20, राइट, तो लेंथ कितनी होगी बेटा, 2 into 20 means 40. सो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 22 सा मतलब 40 मीटर. डन. एनी डाउट बेटा, 40 into 20 4 2 800 मीटर स्क्वायर, मतलब यस ये पॉसिबल है, राइट. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बेटा, इट्स सो इजी. प्लीज राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. Is the following situation possible? If so, determine the present is. Means like the previous one question beta. First of all, we need to check it out. Is it this type of condition is possible or not? चलो तो शुरू करते हैं बेटा. The sum of age of two friend is 20 year. So I suppose beta let present age of two friend x and y years. ठीक है, दोनों का एडिशन कितना दिया हुआ बेटा, that x plus y equal to 20. It means you can say beta y equal to 20 minus x. What is the first equation beta? Second condition 4 years ago, मतलब 4 साल पहले. जो दोनों फ्रेंड है बेटा, जो x से अभी आपके एज 15 है बेटा, तो व्हाट अबाउट योर एज 4 इयर्स अगो बेटा, 15 minus 4 means 11. सो सिमिलरली जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी है x, तो 4 साल पहले कितनी होगी x minus 4. सिमिलरली जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज अभी करंटली प्रेजेंट y है, तो 4 साल पहले कितनी होगी y minus 4 बेटा. व्हाट इट और नॉट. अब उन्होंने क्या बोला बेटा, 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, was 48. Got it? It's so easy question beta. Put the value of y. So we get the equation in the one variable beta. So y equal to 20 minus x minus 4 as it is beta. पहली इक्वेशन तो हमने यूज किया, y equal to 20 minus x beta. x minus 4, right? 20 minus 4 beta, 16 minus x. Multiplied, what is it beta, 16x minus x square minus 64 minus minus plus 4x beta is equal to 48. Any doubt? So minus x square 16x plus 4x, that is 20x, right. minus 64 उस तरफ जाएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा. Any doubt? Anyone? इन दोनों को मैं उस तरफ ले जाना पड़ेगा बेटा, तो x square minus 20x plus 112 equal to 0 beta. Any doubt? So this is your quadratic equation. Now you have to check that this type of situation is possible or not. It means you have to find out the d. D means discriminant, right? अगर d की वैल्यू greater than 0 या equal to 0 आती है, मतलब yes, this type of situation is possible. But if d comes less than 0 मतलब negative, तो ये situation possible नहीं है. Got it?
राइट। तो इक्वेशन तो बेटा कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, that is ax square plus bx plus c equal to 0. Compare, what is that beta? A equal to 1, b equal to minus 20 and c equal to 112. Now use the formula beta, d equal to b square minus 4ac. The value of b beta minus 20 minus 4ac. Minus 20 minus square beta plus 20 the square 400 minus 112 into 4 बेटा 448. ओके, इसका आंसर कितना है बेटा? d इक्वल टू माइनस 48 मतलब लेस देन 0. d लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स. मतलब यहां पे आपको लाइन लिख डालनी बेटा, ये सिचुएशन मतलब दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल. राइट? एनी डाउट बेटा? अगर यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आता तो हमें सॉल्व करते x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. x एंड y दोनों फ्रेंड थी एज. गॉट इट? प्लीज राइट डाउन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5. राइट? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इज गिवन बेटा 80 मीटर and area is equal to given 400 meter square. Right? If so, find its length and breadth. मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, हमें चेक करना है बेटा. तो उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन थे जैसे हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती बेटा. पेरीमीटर वी नो इट बेटा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेटा 2 into L plus B equal to 80. To that side beta, what is that? Length plus breadth equal to 40. Right? अगर मैं breadth तो थोड़ी देर के लिए h ले रहा हूं, let breadth equal to h, तो length कितनी हो जाएगी बेटा? b उस तरफ जाएगा, मतलब length equal to 40 minus b बेटा. Right? मतलब 40 minus h. Any doubt बेटा? ओके, एरिया कितना दिया होगा बेटा? 400. एरिया इक्वल टू 400 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बेटा कितना होगा? 400 बेटा. व्हाट अबाउट द लेंथ? दैट इज 40 माइनस x एंड ब्रेथ कितना बेटा? x. एनी डाउट एनीवन? राइट? सो व्हाट इज इट बेटा? 40x minus x square equal to 400. Take both the things that side beta. What is that? x square minus 40x plus 400 equal to 0. Got it? Now we need to check that beta is it possible or not, and for that we need to find d. तो d की वैल्यू कंपल्सरी क्या आनी चाहिए बेटा? राइट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर द रियल रूट. तो कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन बेटा. ax square plus bx plus c equal to 0. What is that beta? a equal to 1, b equal to minus 40 and c equal to 400. What is beta? Now use the formula of d beta, that is b square minus 4ac. Value of b beta minus 40 square minus 4ac. 40 square beta 4 the square 16 and double 0 minus 4 4s are again 16 बेटा. मतलब आंसर कितना है? d 0. मतलब यस रियल रूट एग्जिस्ट. मतलब यस ये कंडीशन पॉसिबल है. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यूज द फॉर्मूला बेटा x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2a. व्हाट इट? तो x इक्वल टू माइनस इन प्लेस ऑफ b बेटा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b बेटा? minus 40 plus minus the value of d beta 0 by 2 into a. a की वैल्यू कितनी है बेटा? 1. एनी डाउट? माइनस माइनस प्लस मतलब 40 by 2 मतलब कितना आंसर आया? 20. तो h हमने क्या लिखा बेटा? ब्रेथ. सो ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 मतलब वो भी कितना होगा? 20 मीटर. मतलब दोनों इक्वल होंगे. गॉट इट? एनी डाउट बेटा इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ this exercise as well as this chapter. Right? Please note down.